Right, this is going to be my best feature. Welcome, welcome, welcome to the Cake and Bake Hacks brought to you by Magic Colours. And we have got throughout the show the best of all the tips and tricks that you probably didn't even know that you needed to know. When you've seen what Nasima has in store for you, you'll see what I mean. Nasima Singh, hi. Hi, everybody. So I'm going to show you a hack using Magic Airbrush. So usually everyone knows that when we are using an airbrush, the only way most of the newcomers or the novices use is pushing the lever and then they start spraying. Now, there are two very interesting hacks using the airbrush, which I will be demonstrating, which is one is achieving fine detailing, which you will be able to do. See, if you see here, there are two caps on the nozzle. And if you unscrew this one, so you've left one off. So yes, you just take one of them off. I just took this off. Okay, so I'll just explain it in Hindi also for my other viewers. Okay, so हम जब airbrush use करते हैं, हम हमेशा ऐसे करते हैं, ज्यादातर लोगों को जो एंट्री लेवल में रहते हैं वो सिर्फ ये लीवर पीछे पुश करके यूज करते हैं और स्प्रे करना चालू कर देते हैं. हमें इसे फाइन डिटेलिंग कैसे करते हैं ये नहीं आता है. तो मैं आज एक हैक जो बताने वाली हूँ ये है कि हम फाइन डिटेलिंग कैसे अचीव कर सकते हैं बिना पेंट ब्रशेस को यूज किए हुए. तो उसके लिए जैसे मैं अभी दिखा रही थी कि ये जो नोजल है, जो नीडल होती है एयर ब्रश की, इसके आगे दो कैप्स होती हैं. जब हम इसके आगे वाली फर्स्ट वाली जो कैप है वो निकाल देंगे, ध्यान रखिएगा, इसे बहुत अच्छे से संभाल के रखिए. अगर ये गुम हो गई तो आपका एयर ब्रश बहुत ज्यादा काम का नहीं रहेगा. सो यहाँ पर एक छोटी सी नीडल है. व्यूअर्स, आई एम नॉट टू श्योर इफ यू कैन सी दिस. देयर इज अ नीडल टिप. Okay, so this is what we are going to use to do the fine detailing. Okay, and I will start now. So I'm going to use the regular Magic Airbrush color. मैं Magic के Airbrush color use कर रही हूँ fine detailing दिखाने के लिए. So we just tip in a couple of drops of the color, and I have already removed the tip. So you have to be very careful. Don't touch here, okay? Because this is really like very, very sharp, okay? And this can really get into your finger. So जब भी आप इसे निकालते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे उंगली न रखें, क्योंकि ये बहुत शार्प है और सीधी उंगली में घुस सकती है. ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये दिखाने के लिए कि इससे हम डिटेलिंग कैसे कर सकते हैं. Okay, so I'm going to start now with the detailing. So I'm going to start using this airbrush. It's a very simple portable one. You just have to depress this button, and I'm sure you can hear that's already buzzing. Fine. So using this lever, okay, I don't have the nozzle cap now. So there is one feature of airbrush. I don't know how many of you know that the closer you are to your surface, the working surface, the finer the details you get, and the farther away you are, it covers more of a surface area. So same is the case when you're doing a detailing without the nozzle cap. The closer you are, the finer you will get the detail. The farther away you are, the more surface area that it will cover. Okay, हमारे हिंदी व्यूअर्स के लिए आप लोगों को पता नहीं, ये पता है कि नहीं कि आप जितना नजदीक अपने वर्किंग एरिया के रहेंगे, सरफेस आपकी गन जो है जितना सरफेस एरिया के नजदीक रहेगी उतनी आपको ज्यादा फाइन डिटेलिंग मिलेगी. आप जितना दूर से काम करेंगे उतना आप ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया कवर करेंगे. So I am very, very close. This is just about a centimeter that I am to the surface, the working surface. And what I do is I just start pulling the lever behind. Now there's also one more feature. If you are not able to control the lever with your hand, you can just tighten this needle. Okay, I'm very close to the surface here. Okay, and I'm starting to draw.
again show it here. See, suppose we are doing, you have to do the branches of a tree. Okay. Now, I think people who have only ever used the airbrush just to do some shading will find That's this right. like a whole new skill. Yes, that's right. So detailing on a fondant you can very well do with this. So जब हम यूज करते हैं एयर ब्रश को, हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हम इससे फाइन डिटेलिंग भी कर सकते हैं. हम ज्यादातर एयर ब्रश यूज करते हैं, जैसे कि रोज ने कहा कि हम यूज करते हैं इसको सिर्फ शेडिंग देने के लिए, बट इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं एयर ब्रश यूज करने के लिए. उसमें से एक है डिटेलिंग के लिए. मैं इसलिए ये दिखा रही हूँ क्योंकि मैं क्रीम केक्स पे पेंट बहुत करती हूँ, तो मैंने यही चीज फॉन्डेंट पे और गनाश पे ट्राई की. तो ये बहुत अच्छे से काम करता है फॉन्डेंट और गनाश के ऊपर. क्रीम केक्स के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक छोटी सी जैसे वार्निंग होती है, चेतावनी होती है, वो दे दूंगी कि क्रीम केक्स में अगर आप इसे यूज करेंगे तो उसमें थोड़ी सी डेंट पड़ सकती है, बिकॉज इसका जो प्रेशर है वो बहुत हाई होता है. सो स्पेशली जब आप नीडल का कैप निकाल देते हैं तो वो बहुत हाई प्रेशर से कलर उसमें से निकलता है, तो वो क्रीम में डेंट कर देगा. What I'm trying to say is that when we are using it on a cream cake, okay, we can't really use this technique on a cream cake, but very well on a fondant and ganache. That is because once we have unscrewed the cap here for the tip, the color that comes out with a lot of pressure. Okay, and if we are doing it on a cream cake, the whipped cream cakes that we here are very prevalent in India, it will cause a dent in the cream, and which is why this is not recommended to be using in there unless and until you have really like got a very good hang of it, of the distance at which you can use it. So second hack अभी जो हम करने वाले हैं वो है सुपर विप पाउडर्स. हम उसे एयर ब्रश में कैसे यूज कर सकते हैं. सुपर विप जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, मैजिक कलर्स ने इंट्रोड्यूस किया है, हम उसे यूज कर रहे हैं डायरेक्टली इन अ पाउडर फॉर्म विप क्रीम में ऐड करके. ओके, हम उसे ऐड करते हैं, डेवलप होने देते हैं, और फिर हम उसे क्रीम को डार्क कलर्स उसमें अचीव कर पाते हैं. हम अभी जो मैं हैक करने वाली हूँ वो एयर ब्रश में सुपर विप पाउडर्स को कैसे यूज कर सकते हैं और बिना क्रीम में ऐड किए हम डार्क कलर्स कैसे अचीव कर सकते हैं उसके बारे में. सो व्यूअर्स, व्हाट द सेकंड हैक दैट आई एम गोइंग टू शो नाउ और डेमोन्स्ट्रेट टू यू इज हाउ डू वी यूज सुपर विप पाउडर not as a powder form adding directly into the cream to achieve the dark shades in cream, but how to use them in a airbrush machine. Yes, you heard it right. We are going to use it in an airbrush machine. We are going to dilute and use it in the airbrush machine. Almost how we do the airbrush colors, but then the airbrush colors don't give those very dark results, and which is why Super Whip was bought into the market, right? And we are just going to use it in a different way. Instead of adding it to the cream, we'll be airbrushing. So these are the Super Whip powders. Okay, they come in smaller packs as well as they come in the bigger packs. Okay, so these smaller ones are a set of 6 colors. Fine, so I'm going to use blue out of this now too. They have blue, they have purple, and they have black, pink, green, and red. Okay, so I'll be using blue. So here, if you see, they are in a powder form, right? You can see that they are in a powder form. I'm going to scoop out a little out of this, and let me assure you, they go a long way. A little goes a long way. So अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम ये सुपर विप जो है ये छोटे छोटे ऐसे वाली पैकिंग्स में आता है, और ये ऐसी बड़ी वाली पैकिंग में भी आता है. बड़ा आप इंडिविजुअल खरीद सकते हैं, और जो छोटे वाले आते हैं ये 6 का पैक आता है, 6 डिफरेंट कलर्स का, ये ले सकते हैं. अब मैंने इसे खोला है, मैं ब्लू कलर यूज करने वाली हूँ, तो अगर आप देखें तो ये एक पाउडर फॉर्म में है. सो आई हैव टेकन वेरी लिटिल ऑफ इट. इफ यू कैन सी इन दिस कप. Oh, that is quite a small amount. That's it. Okay, I will prepare as and when I need, but
to start with, this is all that I would need. इतना ही हमें चाहिए, इससे बहुत ज्यादा नहीं. डिपेंड करता है आप कितना काम करने वाले हैं एक सिंगल कलर से. अब मैं जितना करने वाली हूँ मुझे लगता है वो इतने में हो जाएगा, तो मैं बस इतना ही यूज कर रही हूँ. अगर हमें जैसे चाहिए हम बनाते रहेंगे, नहीं तो ये ड्राई होता जाएगा. So if I make too much of it at one go, this might just dry out and I'll have to keep diluting. So I'm going to make little at a time. And the medium I'm going to use to dilute this is a rejuvenator. So I will be adding a few drops of it into this. Okay. Quite a few rather. Okay. And we'll just mix this up. Okay, mix it well. There are chances that there would be some undiluted bits. I want to show you that because this is very important. If you can see it on my brush, is it visible? Yes. Yeah, there is kind of a little blob, and you just keep on mixing and that will eventually dissolve. Okay, so अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपको यहाँ पे दिख सकता है कि यहाँ थोड़ा सा अनडाइल्यूटेड पाउडर रह जाती है, लेकिन आप इसको अगर कंटिन्यूअसली मिक्स करते जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा. It's such a strong color for such a tiny amount of and powder. And it's quite flowy. Wow, what really strong color just from that tiny amount of powder. Yes, and this I am not really even pulling the lever back completely. This is not even halfway through. And the matte effect that this gives is really very brilliant. This is on a cream cake. This is a cream cake. Wow, that's such a great effect. Okay, so this is the result that this would give. After this gets absorbed in the cream, probably if needed, you may do a second coat, but you really will not need this if you whipped your cream well and you've got a right consistency. ये जो इफेक्ट हमने अचीव किया है, ये सुपर विप पाउडर्स एक रिजुवेनेटर या बेकर स्पिरिट कहते हैं उसे, या इवेपोरेक्स कहते हैं. ये अल्कोहल भी आप कोई भी यूज कर सकते हैं ये डाइल्यूट करने के लिए इस पाउडर को, और वो इतनी बारीकी से डाइल्यूट हो जाती है कि बिल्कुल रेसिड्यू नहीं रहता है पीछे, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है. और आप इसे ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा ब्यूटीफुल इफेक्ट आया है इसे. और मैंने एकदम प्लेन वाइट क्रीम ली है. यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर हमें एयर ब्रश करना है तो पहले हम क्रीम को टिंट कर लेते हैं उसी कलर से, ताकि जब हम उस पर एयर ब्रश करें तो फेड होने के बाद भी वो इतना फेड ना हो कि हमें जो डार्क शेड चाहिए वो नहीं मिलता है. सो यहाँ हमने अब देखिए कितना अभी भी ब्राइट और कितना बढ़िया है, डार्क है. ये विप क्रीम के ऊपर किया गया है. और इससे इसका बेनिफिट ये है आपको कि आपको बार बार एयर ब्रश की बॉटल या फिर से वापस आके सुपर विप की अलग से यूज नहीं करना पड़ता है. आप अगर चाहें तो इसे टिंट भी जो है सुपर विप से करें और उसके ऊपर फिर एयर ब्रश से सुपर विप यूज करके ही एयर ब्रश करें, तो बहुत ब्राइट और बहुत बढ़िया कलर्स, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इससे. So Nasima, I'm excited to see this next one because this effect is going to. Yes. I don't mean to be dramatic, but this can change your cake life, can it not? That's right. Yes. The next hack that I'm going to do is the splutter effect, or the snow effect, or a galaxy. When you're trying to show stars, the galaxy effect using the airbrush. I'll be demonstrating. Usually, what happens when you have to show the stars in a night sky or snow, we go with a toothbrush and we go dang 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 and keep spraying. Flicky flicky. Exactly. So instead of that, we are going to use the airbrush to see, and I'll be showing how to do that without using the toothbrush, and you can save your toothbrushes. Okay. अभी अगला जो हैक मैं दिखाने वाली हूँ वो ये है कि हम जब नाइट स्काई करते हैं, गैलेक्सी केक्स करते हैं, उसमें जो स्टार इफेक्ट होता है जो हमें दिखाना होता है, यूजुअली हम क्या करते हैं, हम एक टूथब्रश लेते हैं और एक ब्रश के पीछे का ये लेके हम उसमें कलर डाल के और फिर हम उसे ब्रश करके हम उसमें एक स्प्रे करके हम एक इफेक्ट दिखाते हैं जो कि नाइट स्काई के लिए, गैलेक्सी के लिए काम आता है. या हम स्नो इफेक्ट दिखाते हैं. अगर आप लोगों ने मेरे पेंटेड केक्स देखे हैं, मैंने बहुत स्नो इफेक्ट वाले केक किए हैं, वो सब इसी
ट्रिक से किए हैं. हम टूथब्रश बिल्कुल भी नहीं यूज करते हैं मेरे वर्कशॉप्स में स्प्लटर इफेक्ट करने के लिए. सो अभी पहले मैंने आपको एक दिखाया कि हम जब डिटेलिंग कर रहे हैं तो इसकी 2 कैप्स है, उसमें से हमने एक फर्स्ट वाली कैप निकाली थी. ठीक है, अभी हम जब स्प्लटर इफेक्ट करेंगे तो हम फर्स्ट वाली और सेकंड वाली दोनों कैप्स निकाल देंगे, और वो एक टाइम में ही सेकंड कैप आप निकाल दोगे तो वो पूरी तरह से निकल जाएगी. और वो यूज करके हम स्प्लटर इफेक्ट कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ. So what I'm going to do is, earlier I demonstrated that just by removing the first cap, how did we achieve the fine detailing. Now we are going to unscrew both of these caps. There are 2 caps here. The first is a smaller one, the second is a wider one. We will be removing, unscrewing both of them, and we will be exposing the needle a little more. Okay, but now instead of getting the more finer details, what we are going to get is a splutter effect. Okay, and I'm going to unscrew this. So this both have come out together. Okay, again, keep it very carefully. You don't want to lose that. And if you see, this is exposed the needle slightly more, okay, than what we had with only the single cap after removing the single cap. Okay, ये आप needle देख रहे हैं थोड़ी सी ज्यादा expose हो रही है. अभी पहले एक कैप निकाली थी तो हमें बहुत हल्की सी टिप दिख रही थी, अब ये पूरा की पूरा हमें इसका नोजल का टिप दिख रहा है. ओके, एंड आई विल बी यूजिंग white color, white airbrush color from Magic, because I've done this dark shade of blue. See, it's been quite some time now since we sprayed it. It's still nice and dark. Okay, on the beautiful color. Yes, it is. And once it settles and completely, it gives a very beautiful matte effect, which really looks very pretty. तो सेम अभी इसके कप में हम थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स, थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा हमें, कुछ ड्रॉप्स हम इसके डालेंगे मैजिक कलर्स के. So what I'm going to do is push the lever back and, you know, continuously. I want you to see my finger movement also. You're pumping. You're yes, pumping. I'm continuously pumping it. Continuously. Okay. So I'm able to give this snow effect or the galaxy effect. It's better that you give this at the end after your colors have completely settled in. Okay, so that there's no merging. Now it's because they're still settling in, that white would absorb a bit of a blue. But if you let it settle, okay, it will give you a very beautiful. Can you see this? We can yes, we can see very well. I'm predicting for next year there will be a lot of galaxy cakes in India. Yes. Yes, I just hope so. But yeah, who doesn't want to have a go now? If you've got an airbrush, and airbrushes are not that cheap, so you kind of want to be able to use it. What a fantastic way to use a technique. Right. Perfect. And we don't forget to put back the caps on. We don't want. Do you know what I've them. used that technique for? You know, when you have pears, when you're trying to do realistic fruit, if you have a pear and it's got that dimpled splatter effect with the light brown. Right. Right. It looks beautiful. Yes. Absolutely. So you don't have to keep moving between the airbrush and to the toothbrush. Okay. You're able to achieve that with the airbrush alone. Throw the toothbrush away now. Yes, put the toothbrush away. Definitely. Nasima and Magic Colours, they are amazing little hacks. I really hope there will be people at home saying, wow, I need to get my airbrush out and have a go. And show us what you do. Show us the effects that you create, because we would love to see that. Nasima Singh, thank you so much. And Magic Colours. Thank you so much. Thank you so much, Rose. You know, I'm looking forward to the creations. Yeah, and this is a treat for us because we're getting to see in a very short amount of time an awful lot of things that will change your cakes forever. You will never look back. We've got so much more coming on during the show. We've got loads more hacks from Magic Colours, loads more. So don't go away. We'll see you.